Good morning, dear students. Welcome back to your online classes. Okay. Today we will revise your first chapter, matter. Okay. I know already all of you very well about the matter, state of matters. Okay. Here, convex surface, concave surfaces. Okay. Surface tension, change of states, different processes related to the change of states, melting, freezing, condensation, boiling, evaporation, sublimation, desublimation, okay, etc. So one by one we will revise all these points, okay, under this chapter, matter. Here. So now we'll proceed. First point, matter. What are the matter, or what is the matter? We know that just we can study this point under the two subjects, two branch of science, physics and chemistry both. Physics and chemistry both. हम दोनों सब्जेक्ट में इसको स्टडी करते हैं मैटर के बारे में ना. But here we will discuss about the physical properties of matters, and in chemistry we will discuss about, okay, we discuss about the chemical properties, chemical reactions and chemical properties of all the matter. Okay, so basically physics just based on the, means we can say that in physics subject we will study about the different law of nature. Law of natures, na? Here, okay, means every things, every just events that are happening in our atmosphere, surroundings, na, just all based on the some different rules, laws, okay, of nature. Clear? Okay. So now, what is the matter? Whatever we see in our surroundings, each and every object, जो भी कुछ हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं या देखते हैं, clear? Like chair, okay, plants, okay, natural things, na, plants, wood, electronics, okay. So examples are what? Like chair, yeah, okay, electronics, appliances, okay, TV, fridge, cooler, vehicles, different type of vehicles, here, okay, some other just raw materials, okay, food items, here. So these some raw materials, here, okay. So these are called what? Matter. So all these type of different things which we can see or we see in our surroundings, these are called matter or substance. But these are different from each other. How? Because these different type of, or these matters, okay, or substance are made from different elements, different elements or particles. Here, but one thing is common in our what? They all are type. What? They all are type of matter. Okay. So all the things, objects that we can see in our surroundings, that are called matter. Clear? Okay. Matter. So matter we can define finally anything which occupies space and has some mass. Anything which occupies space, anything or object which occupy space and has some mass. Okay, is called matter. Anything which occupies space and has some mass is called matter. मतलब कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ जो हमको दिखती है वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसके बाद कुछ मास होता है ना, लाइक दिस मार्कर ना, इसलिए वी कैन फाइंड इट्स मास ना बाय यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेइंग मशीन. इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हील बैलेंस पे रख करके इसका मास निकाल सकते हैं. ओके,
इसको हम कहीं भी कट करते हैं तो क्या होता है, देखिए ऑलवेज इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, इतना स्पेस से कवर कर रहा है ना, क्लियर, लाइक दिस बुक इट कवर दिस मच स्पेस, इट कवर्स दिस मच स्पेस, इतना स्पेस ये कवर कर रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, क्लियर, इजली वी कैन फाइंड द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, वी कैन मास ऑफ आवर बॉडी, our body is also type of matter, we can also cover some space, okay, and our mass we can easily or find our mass of our body using the weighing machine, अपनी बॉडी का ही मास फाइंड कर सकते हैं. सो वट एवर वी कैन सी आवर सराउंडिंग्स, जो भी कुछ अपने चारों तरफ देखते हैं वो सारी चीजें क्या है, मैटर, क्लियर, ओके. बट इफ वी टॉक अबाउट सम स्पेशल थिंग्स, स्पेशल things, or we can say that these are exceptional, कुछ exceptional चीजें भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम, वैक्यूम there is no any particle, no any element, means nothing, so vacuum is what, not a matter, not a matter. We can't determine and define that it has some mass, is occupied space, because it did not constitute any element or particle, इसमें तो कोई element or particle नहीं होता, so हम बता सकते हैं कि मैटर है कि नहीं, so it is not a matter. Our emotions, feelings, हमारी जो इच्छा है, feelings, emotions है, it is also not a matter, ये matters नहीं, clear. Same we can say that victory, okay, कोई जीत गया है, victory, okay, या कोई हार गया है, ओके, सो इट इज ऑल्सो नॉट ए मैटर, क्लियर. बट सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ओके, आयरन, कॉपर, ब्रोंज, these are the metals, these are metals are matter or substance, clear, okay. So finally we can say that anything which occupies space and has some mass is called matter. It's called matter or substance. Every matters are made from small particles called element. जो ये matter है तो किससे बना होता है आपका, किससे बना होता है, all the matters made from small particles called elements. इसमें होता है elements. Elements क्या होता है, elements or particles. An element is defined as a substance or a matter which cannot be subdivided, जिसको हम किसी और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, okay, which cannot be subdivided by any physical or chemical changes or process, जिसको हम किसी भी chemical change या process से और डिवाइड नहीं कर सकते. Smallest part of the matter, element, smallest part of the matter, or it is considered also part of the matter. Clear? Elements made from molecules and molecules made from atom. Elements किससे बनते हैं, molecules से, और molecules किससे बनते हैं, atoms. Molecules क्या होते हैं, अणु, and here this is called अणु and this is atom, परमाणु. First time one just physicist said about these two molecules and atoms. He said that just the name of these two things, molecules and atoms. उन्होंने क्या बताया, इनका नाम क्या बोला, he called that these two things अणु and परमाणु, अणु and परमाणु. उन्होंने इसको क्या बोला, अणु, और इसको बोला परमाणु, ओके, इसको उन्होंने अणु बोला. और so molecules क्या होते हैं, molecules are also the smallest unit of element, molecules are smallest unit of elements, okay, molecules are smallest unit of matter. Also you can say that molecules are smallest unit of matter because it's a part of element, okay. So molecules are smallest unit of matter, okay, which has independent existence and can retain complete physical and chemical properties of matter. Means molecules is
just produce element. These elements are made from molecules and molecules is the composition of atom. जो मैटर किससे बना होता है? एलिमेंट्स बना होता है. एलिमेंट्स क्या होता है? इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ मैटर्स. ओके, constituents of matter, okay, which cannot be subdivided. Molecules are what? Smallest unit of matter, which again can have independent existence. Atoms, smallest unit of element, smallest unit of element, okay, which also has an independent existence, may or may not have an independent existence, but they can participate in chemical reactions. Here, so atoms से मिलकर क्या होता है? Molecules में होता है. Molecules आपका elements से फिर matter. Here, we can say that matters, any type of matter is the combination of these elements combination of molecules, then molecules collection of combination of atom. Clear? Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है ना, वाटर किससे बनता है? वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है H2O. इसमें दो तरह के एटम है ना, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है. 2H हाइड्रोजन के दो एटम है और किसके हैं? इसमें कितने हैं? ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है और किससे बना हुआ है? किसी से बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है वाटर. क्लियर? ओके. ऐसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+, Cl-, क्लोराइड है इसमें एक एटम और एक हाइड्रोजन एटम है. क्लियर? तो सेम एज मेनी मैटर्स और all the matters just made from the elements made from the molecules and molecules made from the atom. Clear? Okay. Now molecules, just I said that ना, मैंने आपको यहाँ बोला molecules, atoms made from elements or molecules or atom. Sorry, matter made from molecules. Matter made from molecules. इसमें होता है molecules ना. So how the molecules present inside the matter? कैसे molecules जो है वो exist करता है? How molecules exist inside the matter? कैसे वो matter के अंदर कोई molecules exist करता है? Means now we are going to discuss about the existence of molecules. Okay, position of molecules. Okay, nature of molecules inside the matter, in different state of matter. Clear? Okay. So we can say that here it depends upon kinetic theory, or it can be expressed or described by a theory that is called kinetic theory. Kinetic theory. What is this? Kinetic theory. Kinetic means motion, movement. So molecules of each and every matters always in motion, exist in motion. कोई मैटर उसमें जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? मोशंस में होते हैं. अगर सॉलिड है तो वो अपने ही फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं, और कोई सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल्स अपने ही फिक्स्ड पोजीशन में चारों तरफ वाइब्रेट करते हैं. लिक्विड है तो मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. गैसेस हैं तो मॉलिक्यूल्स आर टोटली फ्री होते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं, इनसाइड द कंटेनर, आउटसाइड द कंटेनर. क्लियर? So we will discuss later about this. Okay, in 3 state of matter, molecules arrangement in 3 state of matter. But here, first we discuss about the kinetic theory of matter. What is the kinetic theory of matter? Means under this point we will discuss about the arrangement of molecules in the matter or in the different state of matter. Clear? Okay. So arrangement of कैसे molecules arrange हो रहा है या कैसे molecules exist करता है. Okay, what are the motion of the molecules in the matter? So first one, what? Molecules exist inside the matter or in continuous motion. Molecules क्या होते हैं? हमेशा वो continuous motion में होते हैं. Clear? Means they have their own kinetic energy. उनके पास उनकी खुद की क्या होती है? kinetic energy.
kinetic energy. Kinetic energy. We know that if any particle or any body is moving, it means it have its own kinetic energy ना. और कोई body move करे तो क्या होगा? उसके अंदर उसकी kinetic energy होगी. Clear? Okay. So in any type of matter, the molecules are in continuous motion and they have their own kinetic energy. Clear? This kinetic energy is depend upon the is directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. If we increase temperature, the kinetic energy of molecules will increase. If we decrease temperature, the kinetic energy of molecules will decrease. Clear? For example, in water. Suppose अगर हम किसी कंटेनर में वाटर लेते हैं और एनर्जी देते हैं यानी हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? पहले जो वाटर है धीरे धीरे वो वेपराइज होता है और उसके बाद से फिर वो बॉइलिंग होने लगता है. ठीक है? होता क्या है इसमें कंटेनर में पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो धीरे धीरे क्या होते हैं ऊपर क्यों जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर क्यों आते हैं ना, मतलब धीरे उनकी एनर्जी मिलती है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. फिर वो ऊपर जाते हैं और ऊपर के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं इनको रिप्लेस करते हैं, नीचे की ओर रिप्लेस करते हैं. क्लियर? सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी दिस AE kinetic energy of the molecules will also increase and vice versa. Clear? Okay. Second point of the kinetic energy वो क्या है? The molecules are arranged inside the matter or they are bind with a force. एक दूसरे से कैसे बदलते हैं? एक फोर्स बदलते हैं. ठीक है? So molecules of same type of element or molecules of same type of matter or just arranged with each other with a force that is called cohesive force. अगर एक ही टाइप का मैटर है, यानी सेम सबस्टेंस के मैटर है, एक ही सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपस में किससे बने होंगे वो दोनों? कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स. ठीक है? और डिफरेंट फॉर सेम मॉलिक्यूल्स. सेम मॉलिक्यूल्स of same matter. Same matter. और डिफरेंट टाइप के मैटर्स के मॉलिक्यूल हैं तो एडहेसिव फोर्स. इससे एडहेसिव फोर्स इसे बोलते हैं वो दे आर जस्ट ज्वाइंट विथ ईच अदर विथ एडहेसिव फोर्स. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, डिफरेंट एलिमेंट, molecules of different element. Okay, so these two cohesive and adhesive, both force is called intermolecular force of attraction. Both commonly or combinedly we can say that इन दोनों को एक साथ कह सकते हैं. We can say that intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Okay, intermolecular force of attraction. Okay, if this force of attraction between two molecules, force of attraction between two molecules, दो molecules में जो force of attraction होता है, okay, लगता है that is called what? Intermolecular force of attraction. If the molecules of different element, different matter, then it is cohesive force. Sorry, it is adhesive force. If molecules of same element, same elements or same molecules of same elements, same matter, then it is cohesive, and different element, different matter, it is adhesive. Clear? Second thing, intermolecular space. Intermolecular space. ये क्या होता है? The space between the two molecules. The space between two molecules. This R. The space between two molecules. दो जो molecules के बीच का space होता है. Clear? The space or gap between two molecules. Clear? This is called intermolecular space. Intermolecular force and intermolecular space both are related to each other with inversely proportional relation. जो दोनों इससे रिलेटेड होते हैं वो कैसे? Inversely proportional relation से. If intermolecular space will increase, the force of attraction will decrease.
Intermolecular force will what increase, the space will decrease. So both are inversely proportional to each other. मतलब अगर स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होगा, स्पेस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा. क्लियर? सो द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मैटर जस्ट अरेंज इन दिस form. Okay, they are bound with each other, they are just attached with each other, connected with each other with a force of attraction, either cohesive or adhesive. The space between the molecules is called intermolecular space. Okay, the molecules are in any type of matter in always in continuous motion. They have their own kinetic energy. The kinetic energy is directly proportional to the temperature. Clear? Okay, and this intermolecular space and intermolecular force are inversely proportional to each other. Clear? So this is the kinetic theory of the matter, or you can say that this describe the arrangement of molecules in the matter, and what is the matter, what is the molecule, atom. Clear? Okay. So students, go through this all the points through the book. If you have any doubt, you can ask in the next class or in comment section, in message box you can ask. We will discuss next point in next class. Okay, kinetic theory describe the position of molecule in three states of matter. Okay, next we will discuss about the arrangement of molecules in solid, liquid and gas. Clear? Thank you students.